Good evening, kids. We are going to discuss the JEE Mains 2025, 23rd January, shift 2. So we'll discuss the paper. Then in the end, I'll give the opinion. पहले हम पेपर डिस्कस करेंगे, बाद में इसका ओपिनियन मैं दे देता हूँ. like पेपर टफ या इजी या मॉडरेट और कितना परसेंटाइल यहाँ पे. तो थोड़ा मैथ्स एंड केमिस्ट्री भी मेरे को थोड़ा आइडिया है. कुल मिला के टोटल परसेंटाइल कितना होता है JEE मेंस और बाकी आने वाले सेशंस को what has to be done. So जो भी एग्जाम दिख रहे हैं now 24, 20 like 28, 29, what precautions we have to take it. So we'll discuss first the paper. Good evening, kids. So we are going to discuss the JEE Mains 2025, 23rd January shift 2 or the evening shift. So I'm your Sridhar sir, physics lecturer. The paper again, I collected around 23 questions. So paper we can call it as like a moderate paper. Again the requirement. So इसको like a अच्छे marks लाने के लिए what is the क्या जरूरी है, like concepts पढ़ना जरूरी है, reading all concepts. Reading all concepts. Then next memorization of formulas and solving last 6 years PYQ. I think almost जो level है 2003 level 2000 like a past 6 years average उसका ले लो तुम. The same level of the papers is coming. तो यहाँ पे जो भी अगला शिफ्ट लिख रहे हैं देने की कुछ भी बात नहीं. तो जो भी आप PYQ रिवाइज कर रहे हो, this is going to help you a lot. Last 6 years PYQ really game changer. तो we'll पेपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. So the first question, the equation of a traveling wave in a medium is given by y of xt 40 sine. So this is like a kx plus omega t. So we'll compare with the standard equation y equal to a sine kx plus omega t. This is there in millimeter. What is the wave speed? The wave speed formula equal to quotient of minus of quotient of t by quotient of x. This is a formula. Quotient of t value is 600. Quotient of x is 20 into 10 to the power of minus 3. This will become minus 3 into 10 to the power of 4 meter per second. A very comfortable wave speed. So what is the name of topic? The name of topic is wave sine sounder. And subtopic will be traveling wave on its string. So then this is the basic formula. Wave speed equal to quotient of t by quotient of x. Simple. Traveling wave, energy of a wave. These are the equations. Like a 4 or 5 formulas are there, like a quotient wave speed, particle velocity, point sun string will execute SHM. Then afterwards, what we are having is like a the intensity of a wave, power of a wave, traveling waves, standing waves. These are some 8 formulas will come. Now also if you revise, very easier. You can manage easily questions coming from this topic. Next question ले लेंगे. In a photoelectric effect, the stopping potential of 2 volt, the work function. Find the wavelength of the incident light. So here we have some surface, some metal. On this, light is incident. The wavelength is lambda. The work function of this is phi. Then the stopping potential. So what is the basic formula? जो भी यहाँ पे electron eject होता है उसका maximum current K max है. So K max is equal to
energy SC by lambda minus work function. Then K max is what? E into Vs. Stopping potential equal to SC E lambda minus work function. Stopping potential वैल्यू कितना है? 2 वोल्ट. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो. 2 SC वैल्यू 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट by this is E. इस तरह यूनिट रख लेंगे. लैम्डा का वैल्यू कितना है? Wavelength. Find the wavelength. This is what being asked. Minus work function. Work function 2.14. तो कंप्लीट ये जो लैम्डा है, लैम्डा विल कम इन नैनोमीटर. 4.14 equal to 1242 by lambda. Divide this, we'll get this one. Nearest answer. यहाँ पे हम थोड़ा nearest ले रहे हैं. And lambda will be nanometer. The unit will be. थोड़ा this for the conversions. थोड़ा याद रख लो. That will be much easier. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. This topic belongs to photoelectric effect. Simple formula. I think अब तक जो भी पूछ रहे हैं, they are photoelectric effect only. The maximum they're asking about the basic formula. Next question. During charging of capacitor 2 microfarad in DC, the displacement current is found to be. Then find the rate of change of voltage with respect to time. What is the formula? Like a potential across the capacitor equal to Q by C. There's a capacitor. Charge Q minus Q. Capacitance will be this one. Here a displacement current will flow. And outside here conduction current. This is a simple diagram. This will be the dropper. Then according to the capacitance concept, V equal to Q by C. The idea of this will be is asking the displacement current, and the displacement current should be equal to conduction current. So we'll differentiate this. dV by dt equal to 1 by C dq by dt. Then what is the dq by dt? This word dq by dt. Across capacitor, the displacement current should be in the gap between the plates of capacitor, the displacement current will flow. In the wire external to capacitor, conduction current flow, and these two will be equal. So therefore now like a dV by dt पूछ रहे हैं. So capacitance का value कितना है? 2.5 into 10 to the power of minus 6. dq by dt 0.25 into 10 to the power of minus 3. A हुआ 5 by 2. 2 by 5. And this will be 1 by 4. Two 1 cha, 2 cha, 10. So this will become 100 volt per second. The concept is based on the RC circuit and also the EM waves. Better we can categorize this in EM waves. थोड़ा बहुत RC circuit का आपको idea रहना चाहिए. Then बाद में the EM waves. The concept is based on the displacement current. What is the subtopic name? Subtopic name is displacement current. The previous one and the answer should be 300. 12 by 4. So it will come around 300. मैं गलती से इसको राउंड ऑफ किया था. दिस शुड बी योर आंसर बिकॉज 12 by 4 तो करीब करीब 300 होगा. ओके, अगला वाला ले लेंगे.
torque on a uniform disk of mass 2 kg radius is given as the power by the torque. ये तो concept based on the rotational dynamics और rotational motion. Torque के बारे में पूछ रहे. Subtopic name is torque. So what is the torque? Like a torque is equal to given by 5t square minus 80. Torque equal to I alpha. Moment of inertia of curved disk कितना है? M r square by 2. 2 into 1 square by 2 will be 1. So यहाँ पे तो moment of inertia का 1 है. So 1 into alpha. Simple variable accelerated motion अगर थोड़ा ये idea रहे तो भी okay, काफी है, can manage. Then further d omega by dt equal to 5t square minus 80. इसको हम इंटीग्रेट करेंगे. Initially at rest at any time t 0 to t. Initially it was at rest, so omega equal to 5t cube by 3 minus 18 to t square by 2. Then हमें ये टॉर्क तो मिल गया. नो फाइंड द पावर बाय द टॉर्क. ये थोड़ा लगे व्हाट इज द पावर हम इस तरह डिफाइन करते हैं, फोर्स इनटू वेलोसिटी. Then f into x, v by x. So this f into x will become torque, v by x will become omega. For rotational motion, पावर को इस तरह डिफाइन करते हैं हम. Like what is the power? Power will be torque into angular speed. For linear motion, the power will be force into linear velocity. But then the formula will be torque. Torque का वैल्यू कितना है? 5 t square minus 80. ओमेगा का वैल्यू कितना है? at t equal to 1 second पूछ रहे हैं. So 5 into 1 square, 8 into 1. इसका टोटल वैल्यू p will be 5 minus 8. 5 minus 12, 7 by 3, or 2 into 5 minus 8, 3. This will be 7, this will be 3. So 7 by 3. At पूछ रहे ना. So fine, this is sir negative आ रहा है. Okay, no problem. Because retarding torque. Sir, what do you mean by negative sign? Negative sign will be retarding torque. It will be. That will decrease the angular speed. Topic is based on the rotational dynamics, based on the idea of the torque. This will be your answer. So what is the formula? Formula ए तुमको ए वाला formula याद रहना चाहिए. For rotating motion, power equal to torque into angular speed. For linear motion, power equal to force into velocity. Okay, fine. Next question ले लेंगे. ये तो very easy based on the electromagnetism chapter. Based on the idea of the conversion of galvanometer to ammeter. इसको हम current density में ले सकते हैं. Moving coil galvanometer converted to ammeter. ये वाला, this is the galvanometer. इसका shunt value is यहाँ पे ammeter range maximum current 3 ampere. यहाँ पे करंट कितना फ्लो होता है? IG. यहाँ पे कितना करंट फ्लो होता है? I max minus IG. गैलोमीटर रेजिस्टेंस इसका 30 ओम है. नाउ ये शंट वैल्यू पूछ रहे. Then the resistance is
नाउ अगर आपको इवन उतना याद नहीं रहे तो conversion of galvanometer, what is the subtopic name? Conversion of galvanometer to ammeter. अगर आपको याद नहीं रहे तो भी okay, you can manage. So what is the अगर फॉर्मूला याद नहीं रहे तो you can derive this in exam. जहां पे भी करंट एंटर होता है that end will be positive, जहां पे बाहर आता है so that end will be negative. This for basic current density. यहाँ पे जो हम करंट सेंड कर रहे हैं इसमें से करंट आई जी अक्रॉस गैलोमीटर पास हो जाएगा, बाकी बचे हुए करंट अक्रॉस शंट वैल्यू इट विल फ्लो. देन दे आर पैरेलल नो, ये दोनों पैरेलल है, इसका ड्रॉप तो इक्वल होना चाहिए. देन आई जी इंटू जी शुड बी इक्वल टू आई मैक्स माइनस आई जी इंटू एस. आई जी वैल्यू, आई जी का वैल्यू व्हेन द करंट थ्रू इट इज 20 मिली एम्पियर. कितना करंट पूछ रहे हैं नो, दिस इज द 20 मिली एम्पियर IG value. So 20 into 10 to the power of minus 3. Galvanometer resistance 30. High max value 3. 20 into 10 to the power of minus 3 into S. 0.6. शंट का वैल्यू पूछ रहे हैं. 600 into 10 to the power of minus 3. This will be 3000 into 10 to the power of 3 minus 20 into 10 to the power of 3. इस तरह लिखेंगे हम. So this will be 600 by 2980. 60 by 298. 60 by 298. Now nearest value. So जब भी अब एग्जाम में situation demands, we can choose the nearest value. Let me calculate a 698. 60 by 298. 60 divided by 298. 0.2013. Nearest value. So I think nearest value यही है. 1 decimal पूछ रहे हैं. Conversion of galvanometer to ammeter. Conversion of galvanometer to ammeter. Conversion of galvanometer to the voltmeter. एक बार फॉर्मूलास रिवाइज कर लो, इट बी वेरी यूजफुल फॉर यू. सिंपल आइडिया बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ रहे हैं. Let me save it. This one, this is galvanometer. Conversion of galvanometer to ammeter. Conversion of galvanometer to voltmeter. ये थोड़ा आपको याद रखना चाहिए. This is very important. No, this problem is based on the ray optics. Chapter name ray optics. The subtopic name is spherical mirror. I am writing all the subtopics so that it'll be easy for you, because you can systematically revise things. Then, what is the question? Question यहाँ पे ऐसा है. Okay, a concave mirror of focal length f dipped into a liquid of refractiveness. The new focal length. हमें थोड़ा like a ray optics, just basics. This is nothing to do with the problem. यहाँ पे there's a concave mirror. ये वाला हो गया. This is the concave mirror. इसका focal length f. सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल हुआ. टोटल सेटअप को हम विल इमर्स इन ए लिक्विड एंड हमें सम बेसिक आइडियाज आते हैं. द फोकल लेंथ डिपेंड्स ओनली ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर. जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है दैट ओनली विल डिटरमाइन द फोकल लेंथ. ओके फाइन. नाउ ये तो फोकल लेंथ हुआ. देन इसको हम इमर्स करेंगे. द होल सेटअप विल बी इमर्स्ड.
जब ये सेटअप को इमर्स करेंगे, इमर्स मीन्स विल ब्रिंग द लिक्विड, तो कंप्लीट सेटअप को मैं लिक्विड में इमर्स कर रहा हूँ। तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, लाइक म्यू, म्यू इज द मीडियम बोल रहे ना, दिस द म्यू। सो लाइक सम, यहाँ से इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो चेंज नहीं होगा, जो भी जो बेंड है ना, इसका जो कर्वेचर बोलते हैं, लाइक जितना ये बेंड है, so this bending will not change, so the radius of curvature will not change, so radius of curvature remains same, so the focal length also remains same, and this will be our answer. Fine, so this is the like a simple theoretical thing of कोई like a not needed something high level पढ़ना भी जरूर नहीं है, like जितना आप theory जो पढ़ते हो, वो theory अगर आप सही तरह से रिमेम्बर कर सकते हो, then it's very easily manageable ना, JEE means. ये तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस, द चैप्टर नेम इज द यूनिट्स एंड डायमेंशंस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी। तो पहले तुम एक काम करो, लाइक वेलोसिटी, वेलोसिटी तो इजी है ना, LT-1, सो इससे नाउ वी कैन रूल आउट दिस ऑप्शन, बिकॉज ऑप्शन डी का तो 4 रहना चाहिए, सो दिस इज रूल्ड आउट। बाकी तीन में देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू mr², तो इसका तो डायमेंशंस कितना होगा, m1l², T0। सो इसका ऑप्शन सी, इसका डायमेंशंस होगा ml²। बाकी दोनों ऐसा लगे ए एंड बी करने का जरूरत नहीं है, सो यू हैव टू लुक एट द सी। यहाँ पे हमें सी शुड बी 1 ना, सो सी इज 1, यहाँ पे मिल रहा है हमें, सी इज 1, डी इज 4। बाकी बचे सो ऑप्शंस यू नीड नॉट टू बॉदर, लाइक ऐसे दिस विल बी लेंदी। अगर इसको आप डिराइव करना चाहते हैं, इट्स वेरी लेंथ ऑफ कोर्स, लाइक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, लाइक बी इक्वल टू म्यू नॉट, अगेन म्यू नॉट का वैल्यू सभी पता है ना, सो इसलिए व्हाट आई सजेस्टिंग, लाइक आपको ये दोनों पता है, लाइक दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, सो नेचुरली तो आपको ये दोनों फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं है, लाइक अगर ये ऑप्शन जो भी ये सेटिस्फाई हो रहा है, बाकी ऑप्शंस इसको दो जो नहीं सेटिस्फाई हो रहा है उससे आप पिकअप कर सकते हैं ना, फाइन। तो मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बिकॉज इन एग्जाम यू हैव टू सेव टाइम, दिस व्हाट रिक्वायर्ड। एग्जाम में आपको ऑप्शन पिकअप करने के लिए पूछ रहे हैं, तो ऑप्शंस आपको मिल गए हैं, नो नीड टू फाइंड आउट द इसका डायमेंशंस, टाइम लग जाएगा, यू कैन सेव टाइम। ओके बच्चों, हाँ, so this is the kids like a try to understand the smart way of thinking in exam, huh? Okay, next question. The satellite is closer to Earth compared to Moon. Time period of Moon is faster than the time period of satellite. थोड़ा ये like a gravitation time period of oscillation. So the topic is based on the gravitation. Gravitation chapter is asking about the time period of satellite. The time period of Moon is 27 days. The period of satellite is. What is the formula? Formula अगर अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो इवन देन यू कैन मैनेज, दिस द अर्थ, दिस द रेडियस, दिस इज सम पार्टिकल रिवॉल्विंग, सो इसका तो वेलोसिटी v होगा, देन विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रिपेटल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस शुड बी इक्वल टू, ये पे सॉल्व करेंगे, एफ एस इक्वल टू जी एम ई एम एस बाय आर स्क्वायर।
This will provide required centripetal force. इसका omega, this will be GME R cube. Time period omega equal to 2 pi by t. So therefore this will become 2 pi R cube by GM. यहाँ पे हम लेके मून लेके आएंगे. So एक रफ डायग्राम प्लॉट करता हूँ. यहाँ पे this is the moon and this is the satellite. And बीच में अर्थ है. इसका रेडियस RS, रेडियस ऑफ द मून, इसका RM ले लेंगे. इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा है. इसका एंगुलर स्पीड कितना? ओमेगा एस. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन डिटेल. एक्चुअली विथ फॉर्मूला ओनली वी शुड मैनेज. ये वाला तो अर्थ है. Then there's a formula we derived. So time period of moon depends on what? 2 pi radius of moon by GME. Time period of satellite depends upon radius. Already यहाँ पे हम derive कर चुके. We'll divide these two. अगर हम दोनों को divide करेंगे, time period of satellite पूछ रहे. Time period of satellite, this will be RS by RM whole cube. Then the satellite is 9 times closer to Earth compared to the moon. So RS will be कितना होगा? RS will be RM by 9. Substitute here. Then 27 days बोल रहा है. Time period of satellite. This will be how much? 27. RS by RM. RS by RM का वैल्यू कितना है? 1 by 9. Then, so this will become 27 by 9 cube. 9 cube will become, this will be 27 outside. Will be 1 day. So time period of satellite will be 1 day. Okay, fine. Calculations. So अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहे तो वेरी इजी है. डायरेक्टली यहाँ से आप कैलकुलेशन यू कैन मैनेज विद दिस कैलकुलेशन. डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख सकते हैं. देन ओके फाइन. थिंकिंग सो मच, इतना ज्यादा सोचने में लाइक इन एग्जाम इट टेक टाइम. तो इसीलिए अगर आप रिवाइज करोगे तो यू विल बी रेडी विद द फॉर्मूलास. इस तरह के फॉर्मूलास जब आप फॉर्मूलास याद रहे तो देन कॉन्सेप्ट अगर तो आपके पास अच्छा है तो देन डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट इन एग्जाम विद दिस फॉर्मूला. देन यू कैन सी इन लेस टाइम. 1 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 मिनट में. तो इसके लिए आपको पढ़ना है. यू हैव टू रीड मोर नंबर ऑफ टाइम्स एंड आपको फॉर्मूलास याद रहना चाहिए. ओके बच्चों, सो विल किड्स विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. Based on the EM-based chapter, in an electromagnetic wave of frequency 20 megahertz, value of electric field is 9.3, then the magnitude of magnetic field at that instant. The magnitude of
magnetic field at that value. So like a BC, it's very simple. B naught BC equal to E naught. Something up electromagnetism में EM waves में relation between B naught and E naught. This equation you can remember. Before Christ, like this, BC equal to E. B naught value. You are asking B naught value. C value will be 3 into 10 to the power of 8. E naught value is 9.3. Amplitude, very easy. ये वाला option. So this like a जो आप formula लिख रहे हैं, like what is this? The electric field and the magnetic field in EM wave will be in phase. ये तो in phase में होंगे. Then जब in phase में होंगे, then what is the basic condition is like the magnetic field and electric field are related by this particular equation. तो आप इसको easy ऐसे याद रख सकते हैं. Before Christ equal to electric field B naught C. Question manageable, paper, moderate paper, not tough. Huh? Next question. We'll take the next question. Two charges are located. Question, let me read. Two charges plus 7 minus are located at. Find the electrostatic potential of the system. This is a very simple Q1 minus Q2. Separation kitna U? U equal to K Q1 Q2 by X. K ka value 9 into 10 to the power of 9. Q1 value 7. This is 4. X ka value located at -7 and 7. So total distance will become 14. This is at -7. This is at +7. Total separation kitna hua? 14. Two ja, 7 ja. 2 into 18 into -18 into 10 to the power of 9. Most easiest question. Just you should know the basic formula. अगर दोनों charges positive है तो then this will be positive. अगर unlike charges, if they are unlike charges, potential will be negative. If they are like charges, potential will be positive. See how simple things they are asking, and no need of like a panic. यहाँ पे डरने का कुछ भी नहीं. Like जितना होता है उतना पढ़ लो बस. There's a one simple strategy here. I don't want to trouble students with all unwanted stuff. Take notes, read, remember formula. जो भी पेपर तुम ले लो, attempt it. You can manage very confidently. This was the methodology. इसके लिए आप important questions, PYQ, most important PYQ, the top question, best question, सब garbage will not help you. जब तक आपको फॉर्मूला याद, कॉन्सेप्ट याद नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है, बिना कॉन्सेप्ट, बिना फॉर्मूला, नो यूज. मोटिवेशन सुनना, ऑल दिस नो यूज. सीधी सीधी बात है, लेके पढ़ लो, पढ़ो पढ़ो, या लेके यू रीड, यू विल गेट कॉन्फिडेंट. I'll come from offline coaching more, like will directly interact with the student and we have to produce ranks. The instructions will be like this. Without reading, you don't get. No magic formula, no tricks, nothing will work out. If you read, then it's a confidence. Next question. So this concept is based on alternating current, the angular frequency so when the current has maximum amplitude. This is something like question read कर ले तो series LCR circuit, inductance L, capacitance C, when the current has maximum amplitude, what is the current?
So आप this वाला source. So what do you mean by यहाँ पे resonance? Current has maximum amplitude circuit. Resonance, okay, this is the source. At resonance, when the frequency of source becomes equal to resonant frequency of circuit. What is the resonant frequency of circuit? 1 by 2 pi LC. Now यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? Angular frequency. Omega, omega is asking. तो पहले हम frequency find out करेंगे. L का value 100 into 10 to the power of minus 3. Capacitance value 1 into 10 to the power of minus 9. 10 to the power of 4 by 2 pi. Then angular frequency of the system is being asked. F equal to this much. Omega equal to 2 pi f. Angular frequency will be, let me check it, 10 to the power of minus 12. Yeah, fine. So A wala हुआ 10 to the power of 5 calculation. So 2 pi f 10 to the power of 5 radians per second. इसको हम angular frequency बोलते हैं. The omega को ही हम angular frequency बोलते हैं. This topic, subtopic name is resonance, series resonance. And at resonance, A वाला curve इस तरह रहेगा. At resonance, current will be maximum. ये तो simple theory है ना? Just based on theory. This topic is based on the semiconductor physics. यहाँ पे दो डायोड है, लेके ए वाला एक डायोड है, then next अगला ए वाला डायोड है, then current through the cell, this current I is what we should find out. तो यहाँ पे देख लो तुम, पॉजिटिव टर्मिनल है, it is connected to p type, and this positive terminal again connected to p type of this diode. So I think there's a basic diode symbol. So when you can say both the diodes are forward bias, जब diode forward bias हो जाएंगे, then what is our circuit will be? Our circuit will be जहाँ पे भी डायोड है उसको शॉर्ट सर्किट कर दो. So current I, this is I, is asking this current. We'll call this is better I. का I कितना है? 5 by what is the value of I? I equal to 5 by 20, 1 by 4. So total current will be 2I, 2 into 1 by 4. So this will be 1 by 2, 0.5 ampere. जहाँ पे diode है, when the diode is forward bias, you have to replace with a short circuit. When diode is reverse bias, you should replace with an open circuit. I think this is the simple concept. अगर इतने याद रहे तो fine, you can manage. Just theory, forward bias short circuit, reverse bias like a open circuit. What do you mean by forward bias? जब आप positive terminal of cell connected to p type is forward biased. इसके लिए तुम like लाखों खर्च करते बच्चे. I don't know, like nowadays coaching has become mafia where बच्चे जाके 2 लाख 3 लाख इसके लिए. It is very pity.
आप बुक लेके अपने आप पढ़ सकते हो. दिस इज द फिजिक्स व्हाट वी हैव, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स. फाइन. आई एम टॉकिंग अबाउट जेई मेंस. जेई एडवांस के लिए भी कुछ कुछ से लाइक ए सेल्फ प्रिपरेशन यू कैन मैनेज. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, फाइंड द टोटल वर्क डन फ्रॉम पाथ ए टू ई. ये तो प्रॉब्लम हुआ थर्मोडायनेमिक्स का वर्क डन. यहाँ पे हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ देख चुके हैं. ओके, वाई एक्सिस में प्रेशर है, एक्स एक्सिस में वॉल्यूम है. वर्क डन चाहिए. सो देन वर्क डन इन द पाथ ए बी. Work done in the path AB will be area under the curve P naught into 3V naught minus 2V naught. Work done in the path BC will be 0. Why 0? A to isocoric, work done 0. And what about sir A wala? This is the isobaric. In isobaric process, what is work done? Pressure into change in volume. Then बाद में ले लेंगे CE. See, A wala तो isobaric cooling है. Then what is the work done? Again the pressure into प्रेशर का कितना है 2P नॉट. फाइनल वॉल्यूम V नॉट, इनिशियल वॉल्यूम 3V नॉट. ये तो P नॉट V नॉट हुआ, ये तो 0 हुआ, और ये तो माइनस 4P नॉट. नेटवर्क डन पूछ रहे WAE. दिस शुड बी इक्वल टू सम ऑफ. तीनों का अलजेब्रिक सम कर लो. Thermodynamics, just basic idea, work done, isothermal process, isobaric process, isocoric process. इतने याद रहे तो fine, you can manage. And this topic is based on X-rays. Graph of frequency F of X-ray and atomic number Z of every nucleus is straight line in X-ray emission. So I think Moseley's law, you have to go for Moseley's graph of square root of frequency F and vector and atomic number of Z nucleus is straight line in X-ray emission. So I think it is will not pass through the origin, no, will be a straight line. The problem, the topic is based on Moseley's law. Root F equal to Z into A minus B. So I think a जो graph है now, it will not pass through the origin. F versus Z is not straight line. Root F versus Z is straight line. Root F versus Z should be straight line, not like F versus. So this will be wrong. This will be correct. So we'll pick up this one. Statement 2. Moseley's law. And the topic is, the chapter name is X-rays and a Moseley's law. ये तो भी तेरी है. अगर आपको सर लगे मेरे को कुछ भी याद नहीं, जस्ट मोसलेस लॉ याद है, enough. If you read all the theory, there's a platform for JEE Mains. theory पढ़ना है पहले. theory पढ़ के और थोड़ा basics अगर तुमको समझ लिए तो then formulas, then you can see very easy. यहाँ पे कौन सा भी ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आप हाई लेवल थिंकिंग जरूरी है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. नो नीड ऑफ एनी एक्स्ट्रा एफर्ट. रीडिंग टीचिंग नोट्स, जाके कॉलेज जाओ, सुनो पहले, लेके अच्छी तरह से लेके जो भी टीचर पढ़ाते हैं सुनो, समझ लो वहां पे, देन नोट्स लिख लो. वही नोट्स को आप रिवाइज करो. मोर देन इनफ. एंड सॉल्व PYQ. नो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन RC सर्क्यूट. यहाँ पे हमें कैपेसिटर है. फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट मींस जहाँ पे भी कैपेसिटर है हम इसको ओपन सर्क्यूट कर देते हैं. फिफ्टी नोट 10 नोट कैपेसिटर यहाँ पे. जब कैपेसिटर तो हम उसको ओपन सर्क्यूट करेंगे. द रीजन फॉर दैट, एट T को to infinity, स्टेडी स्टेट बोले तो T को to infinity, and capacitor we have to replace with open circuit. So current
विल फ्लो, यहाँ पे करंट का ये जो पाथ है इस तरह करंट फ्लो होता है सर्किट में। तो द करंट नाउ 5 minus 10i minus 15i 0 I equal to 5 by 25 1 by 5 एम्पियर। हमें तो यहाँ पे चार्ज पूछ रहे हैं, तो हमें ये वोल्टेज चाहिए। यहाँ से हम लूप इक्वेशन लिख देंगे, VA माइनस 10i माइनस VB 0। ये तो KVL, जहाँ पे आप स्टार्ट करते हो पॉजिटिव, जहाँ पे एंड करते हो नेगेटिव। देन दिस विल बिकम VAB इक्वल टू 10i 10 into 1 by 5 2 वोल्ट। तो देन यहाँ पे चार्ज कितना हुआ, Q माइनस Q, Q should be equal to C into VAB 8 into 10 to power of minus 6। VAB वैल्यू हमें 16 माइक्रो कूलम्स इन माइक्रो में पूछ रहे, सो आवर आंसर विल बी 16। दिस विल बी आवर आंसर। स्टेडी स्टेट मींस T को to infinity एंड जहाँ पे कैपेसिटर इट शुड बी ओपन सर्किट। देखो पेपर कितना ब्यूटीफुली दे आर आस्किंग, इट्स नॉट टफ। यहाँ पे भी मैं मॉडरेट भी नहीं, आई शुड नॉट से मॉडरेट ऑल्सो। जो भी आप क्लास में पढ़ चुके, जो भी सुन चुके, अगर उसको समझ लेने के बाद अगर आपको याद रहे तो द रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी बच्चे लाइक दे कुड नॉट डू बेटर इन दिस जेई मीन्स, मैं उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक आप रिवाइज करो। तो इन माय चैनल ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स आई अपलोडेड, लाइक इनटू 1.5 और इनटू 2 स्पीड में रखे, जितना भी theory है उतना रिवाइज कर लो। वंस theory रिवाइज करके then formulas daily make 1 hour only formulas recollection, so बाद में solve PYQ, you can do better in the JEE mains too। Next question, ये थोड़ा it is based on the kinematics projectile motion। A particle of mass m is projected at the angle 60 degree with horizontal, initial kinetic energy is KE naught and kinetic energy at maximum height। I think this is like a, यहाँ से तो समझ लो पत्थर फेंक रहे हो। So at highest point इसका kinetic energy कितना है? So kinetic energy is telling here it is KE naught। यहाँ पे कितना kinetic energy? So we'll assume यहाँ पे speed u at an angle theta। यहाँ पे हमें kinetic energy पूछ रहे, यहाँ पे speed कितना होगा? U cos theta। Horizontal speed remains same in projectile, and at highest point vertical component will become zero। vertical component जो भी है वो zero हो जाएगा। Then it will have only horizontal component। देन इसका मास m एज्यूम कर लेंगे, मास ऑफ पार्टिकल। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, के ई नॉट शुड बी इक्वल टू m u स्क्वायर बाय 2 एट हाईएस्ट पॉइंट। एट हाईएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इसका कितना है, m बाई 2 u cos थीटा होल स्क्वायर। इसको m u स्क्वायर कर देंगे, बाकी बचे तो क्या है, cos स्क्वायर थीटा। m u स्क्वायर वैल्यू विल बिकम के ई नॉट, थीटा वैल्यू विल बी cos square 60 degree, this will become 1 by 4। cos square 60, cos 60 will be 1 by 2, square of that 1 by 4। like मैं बच्चों से like I'll question like इसके लिए आपको कोचिंग चाहिए क्या, like do you need coaching? ये जो क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन में, बच्चे like these are the basics, height, range, time of flight, the kinetic energy, potential। इसको छोड़ के तुम क्या प्रिपेयर करते हो, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। अब देखिए पिछले 6 साल से देयर इज नो क्वेश्चन, ओनली वन क्वेश्चन ऑन इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। रिवर बोट वेरी लेस, रेन अम्ब्रेला वेरी लेस। अगर जब जो टॉपिक है वो क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हैं, उससे पढ़ने से क्या फायदा है। तो यू शुड हैव द बेसिक आइडिया, जो भी आप रिविजन कर रहे हैं यू शुड, तुम्हें वो लाइक एसेंस पता रहना चाहिए। मीन्स लाइक जो एग्जाम लिख रहे हो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा आइडिया रहे तो यू कैन मैनेज।
what topic to read, because इतना सारा syllabus है, like क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, also very important. रेन अम्ब्रेला रिवर बोट जो भी बच्चे लेके अगला शिफ्ट लिख रहे, रेन अम्ब्रेला रिवर बोट जो भी फॉर्मूला से, दैट इज इनफ, नो नीड टू सॉल्व हायर लेवल प्रॉब्लम. Relative velocities, hardly anything asked in JEE Mains till that or past 6 years. What is very important? Motion in one dimension, gravity and projectile. Next question based on the errors. The topic is based on the errors. Errors significant figures like units and dimensions. So general physics का है, वहां से यहाँ question पूछ रहे. So we have the equation. The energy in system varies with position and time, where beta का value दे चुके हैं हमें. The percentage error in x and that in time. Find the maximum error in E at t equal to 5 seconds. इसका maximum error पूछ रहे. So what is E equal to? X to power of q e to power of minus bt. इसका maximum error हमें calculate. Now इसको हम log, taking log on both sides. दोनों तरफ log ले लेंगे. Log e, उसका simplification log x cube. So log e equal to 3 log x and minus beta t. Okay, fine. इसको हम differentiate करेंगे. When you differentiate this, this will become dE by e, 3 dx by x plus beta dt. तो जो भी हम find out करते हैं, we have to search for maximum possible error. So it will be इस तरह होगा, minus plus or minus beta plus or minus dt. तो इसको further simplification करने के बाद a plus or minus beta dt होगा. Percentage error, given that percentage error in x, इसका percentage error कितना है? 1.2. बीटा का वैल्यू कितना है? 0.3. and that percent error in t is 1.6. The maximum percent error in e at t equal to, इसका substitute कर लो, we'll get 6%. Fine, this will be your answer. So this is the idea. अगर आपको equation इस तरह का है तो you have to take something log. जब भी power है तो equations में आपको power आ गए तो then you have to take the log, then the error will get multiplied by the power times. That's a basic concept. The simple math based. अगला question based on the ray optics. This question is based on the ray optics. Then subtopic name is prisms. For a prism, the minimum deviation is equal to the angle of prism. The refractor is root 3, find the minimum deviation. What is the formula for minimum deviation? Mu equal to prism यहाँ पे इस तरह होगा. So जरा basic concept रिवर्स कर लेता हूँ. This is the prism. Then we are sending the ray. At minimum deviation, it becomes parallel to the base of the prism. Okay, ये तो angle of prism and जो minimum deviation हम बोल रहे हैं ना, this is the minimum deviation. This is the angle of incidence I1. This I2. This R1. This R2. Then there's a base. The refracted ray in the prism will be parallel to the base of prism. This is a basic concept.
ओके, यहाँ पे हम व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मिनिमम डिविएशन? R1 plus R2 equal to A, R1 equal to R2, I1 equal to I2. देन डायरेक्टली वो सब डिराइव करने के बाद हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है, A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 साइन ऑफ A बाई 2. म्यू वैल्यू पता है, √3 साइन मिनिमम डिविएशन इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म. तो कंडीशंस क्या दिया यहाँ पे? A इक्वल टू डेल्टा मिनिमम. ये जो है दिस इज द फॉर्मूला. ये आपको ये याद रहना चाहिए. फाइन. देन इसका वैल्यू विल बी नाउ like A only sin A by 2. फाइंड दैट मिनिमम डिविएशन. अगर आप A फाइंड आउट करेंगे और A by 2 करेंगे, ओके फाइन, बोथ आर सेम विल बी नो. साइन ए का एक्सपेंशन, साइन ए का एक्सपेंशन कर लिए तो देन वी कैन रिप्लेस दैट. साइन ए का एक्सपेंशन विल बी 2 साइन A by 2 cos A by 2. देन A वाला sin A by 2. So √3 equal to 2 cos A by 2. So आपका एंगल होगा 60 डिग्री. दिस विल बी आवर आंसर. Minimum deviation formula, prism, just basics. I think this paper is all about the formulas. जितना भी हम 18 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, देखो सब 17 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट 18 क्वेश्चन, ऑल अबाउट द फॉर्मुलास. कौन सा भी ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे देखिए इज आस्किंग समथिंग, यू हैव टू सोच के करना है. थ्योरी फॉर्मूला अगर ये दोनों रहे तो दिस पेपर वेरी वेरी इजी है. Next question again is based on the gravitation. It's talking about the angular momentum. So यहाँ पे now there is a satellite revolving about the earth. ये वाला तो planet earth है. At a height r, this h is telling us. So the total radius अब कितना हुआ? The radius of this will become 2r. यहाँ पे हमारा satellite है. m, mass of satellite will be ms. एंगुलर मोमेंटम पूछ रहे हैं, इसका अलग है. व्हाट अबाउट एंगुलर मोमेंटम? इसका तो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा vs, ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट, हम जो भी बोलते हैं. so then who will provide required centripetal force? The gravitational attractive force Fg equal to gm ms 2r whole square. This will be ms v naught square r gm ms 4r square. so इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना हुआ नो? mv naught square by r gm by 4r. Angular momentum पूछ रहे हैं. What is the basic formula for angular momentum? Angular momentum about center of the earth to be equal to mass of satellite v naught s into radius. Radius of the orbit is 2r. So angular momentum of the satellite. Angular momentum formula mvr, and what is the radius? There's the radius 2r. Again, once again basics. ms. What is the orbital speed? Orbital speed is gm by 4r, 2r. ms gm r, 2 will come outside, 2, this is r. Then this will become mass of satellite gmr.
the angular of satellite above the center of the earth. At a height r above the surface. So the total it will be yeah 2r. Here I missed it. Radius of orbit is 2r, no? So this will become 2r. This will be 2. This will become 2. यहाँ पे थोड़ा calculation गलत हुआ. This will be radius. Radius will be 2r, no? Centripetal force. So the value will be, answer will be 2. ये भी simple formula दे रहा. So जब भी हम height यहाँ पे बोलते हैं, so the height is measured from the surface of the earth. This will be surface, no? जब भी हम height बोलते हैं ना, so that height is taken from the surface of the earth. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. ये तो थोड़ा based on the surface tension concepts. यहाँ पे हम वाटर सरफेस ले लेंगे. ये सब यहाँ पे पानी है और द वाटर व्हाट यू कैन कॉल. बबल कहाँ पे है. And the pressure difference of air bubble of radius 2 centimeter form 20 centimeter below an open surface. यहाँ पे बबल है, इसका रेडियस r and this is depth h. This is air and this is water 1 and 2. तो यहाँ पे प्रेशर कितना हुआ. P2 इक्वल टू P0 प्लस रो GH. P2 का प्रेशर. देन ये तो एयर बबल है. सो एयर बबल मीन्स कितना सरफेस रहेगा. ओनली वन ना. एयर बबल का तो फ्री सरफेस ओनली वन. सो देयरफॉर P1 इक्वल टू P2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन बाय R. P2 का वैल्यू कितना. प्रेशर एट अ डेप्थ रो GH. प्रेशर डिफरेंस ऑफ द एयर बबल. below an open water surface and atmospheric pressure. यहाँ पे surface tension value भी दे चुके हैं. P1 minus P2 is asking. So rho H. इसको क्या. So he is asking the pressure difference. यहाँ पे pressure difference बोले तो this is called as pressure difference. ये वाला this one. So the delta P is what. Rho GH. इसका value find out करेंगे. Rho value will be 10 to power of 3. 9.8 into 20 centimeters. 20 into 10 to power of minus 2. So this will be 9.8 into 2 into 10 to power of 2. 2 H are 16, 1 carry, 2 9 18, 19.6 into 10 to power of 2 or 0.196 into 10 to power of 4. इसको हम एक काम करेंगे. 0.0196 into 10 to power of 5. The nearest will be 0.02. This will be our nearest option. ये जो क्वांटिटी है इसको ही हम प्रेशर डिफरेंस बोलते हैं. This one is what we'll call pressure difference. The topic is based on surface tension and also the fluid static, the static pressure. So small ideas. Next question. This is based on the nuclear physics. Statement 1. For
The binding energy per nucleon is almost constant. The nuclear force is a long range force. No, the nuclear force is a short range force. Nuclear force is a short range force, not long range force. They all are wrong. The binding energy per nucleon is almost constant. Yes, we can put it around 8.3. It will come. This will be correct statement. Statement 2 is wrong. Statement 2 is wrong. So इसमें क्या होना? Only statement 1 is correct. Binding energy per nucleon concept, nuclear physics में. There's a horizontal pipe having fluid density flowing through it at cross section भी velocity सर. यहाँ पे हम एक पाइप ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे velocity VA and इसका cross section C and B. यहाँ पे cross section SC, यहाँ पे cross section SB, यहाँ पे fluid velocity this one. यहाँ पे pressure P and PB. Correct relationship. Yeah, so I think problem based on the Bernoulli's theorem and the equation of continuity. Then pressure at A, kinetic energy at A, plus potential energy at A should be equal to pressure at A, kinetic energy at A, potential energy at A. This topic is based on fluid dynamics, Bernoulli's theorem. Pressure at A, kinetic energy at A will be rho VA square by 2. Potential energy is 0. Both are at same level. हम इसको 0 ले लेंगे. Pressure at B, kinetic energy rho VB square. This is 0. Find the correct relationship. PA minus PB. VA minus VB पूछ रहे हैं. VA square. इसको हम readjust कर लेंगे. VA square minus VB square. इसका तो 2 by rho PB minus PA हुआ. Option 3. Bernoulli's theorem. ये तो purely Bernoulli's theorem. अगर आपको Bernoulli's theorem याद रहे तो then what is the basic formula? Potential energy, pressure energy per unit volume will become equal to static pressure at that point. Then kinetic energy per unit volume will become rho V square, and A and B are on same horizontal level. Potential energy will assume it to be 0. Pretty sure. I think this is the simple formula. अगर क्लास में बैठे हो और Bernoulli's theorem ये पढ़ चुके हो और Bernoulli's theorem आपको पता है तो finish हो this question. No concept, nothing. If a rod of tension 7 produces extension x1, tension of 5 Newton produces. Find the tension that produces extension 7x minus 5.2. We'll do one thing. ये तो elasticity chapter है. 7 Newton. This is a rod of length. यहाँ पे हम 7 Newton force apply कर चुके हैं. Extension कितना है? x1. A tension of 5 Newton. Produces extension of x2. Find the tension that produces extension 7x minus 5x2. Hence modulus equal to 7 by area of cross section A by elongation x1 by L. Same Young's modulus equal to 5 by A elongation x2 by L. इसे हम क्या करेंगे? 7L by AX1, x1 है. यहाँ पे 5L by x2 है. So 7x1 equal to 5x2. 7x2 minus 5x1.
find the tension that produces extension. Now यहाँ पे थोड़ा हम इस तरह ले लेंगे. नो कितने एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन का वायर पूछ रहे नो. एक्सटेंशन वैल्यू कितना है 7x minus 5. इसके लिए कितना टेंशन अप्लाई करना है. तो अगेन दिस विल बी इक्वल टू t by x इक्वल टू 7x1 minus 5x2. तो एक्सटेंशन का वैल्यू कितना है नो, x इक्वल टू वैल्यू कितना लेना है 7x1 minus 5x2. सो t by x कौन सा, तो एक इक्वेशन ले लेंगे. x का वैल्यू कितना है 7x1 minus 5x2. यहाँ पे x1, x2 का वैल्यू कितना है, x2 वैल्यू वी कैन राइट x2 एज 5x by 7. इसको यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. फाइव एक्स वन. लेट मी एडजस्ट दिस. तो मेरे को स्पेस चाहिए कैलकुलेशन के लिए. यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे. ओके फाइन. Yeah, no, we'll calculate. Equal to 7 by x1. x1 तो एलिमिनेट हो जाएगा. So t by 7 minus 25 by 7 equal to 7. तो इसका वैल्यू हुआ now 49 minus 25 equal to 1. t equal to 49 minus 25, 24. There's a concept. अगर तुमको ये थोड़ा बेसिक आइडिया यंग्स मॉडुलस का डेफिनेशन अगर आपके पास है तो देन यू कैन मैनेज दिस क्वेश्चन वेरी इजीली. This is the requirement. Okay, fine. So like a paper, sir, like a, sir, can you say anything about paper? पेपर मॉडरेट भी नहीं, इसको तो हम इजी बोल देंगे. मॉडरेटली वेरी इजी. मॉडरेट एंड फॉर्मूला बेस्ड. अगर यहाँ पे आपको 60 मार्क्स अगर स्कोर करेंगे तो इट विल कम इजिली टू 99%. आपको 65 भी कर दो. The paper is very easy, moderate and formula based, or you can say like a very moderate. Easy भी बोल सकते हैं. And purely formula based. This is the only paper I have seen इस shift में like a purely formula. जितना भी formulas तुम याद कर लोगे उतना benefit है. JEE Mains is all about formulas. आप एग्जाम जा रहे हो तो आपके पास फॉर्मूला चाहिए. Requesting all the remaining session students like revise formulas जो भी time है, like no need to solve any problem, no benefit, formulas if needed. Okay बच्चों, like this is about the basic thing you have to really, and the complete paper, the total the paper analysis में we can put it like cutoff will be around 193 is what I got the information. अगर आपके पास 193 मार्क्स आ गए तो टोटल this will be 99 percentile for 3 subjects, PCM. A little bit you have to do scoring here more. Okay, बाकी बच्चों से जो भी like sections हैं, you have to prepare well.
Okay, bacho, kids, we had a discussion on the JEE mains 2025-23 January evening shift or shift 2. The paper was purely formula based. अब जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्योरली फॉर्मूला बेस्ड. आप देख चुके हैं ना, लाइक जो भी फॉर्मूला, जो भी क्वेश्चन ले रहा हूँ वहाँ पे फॉर्मूला लगा के तुमको आंसर आ. इट्स रियली रियली वेरी गुड पेपर. बल्कि आपको थोड़ा बहुत स्कोर ज्यादा करना पड़ता है, 65 मार्क्स अगर 99% का फिजिक्स में. एंड टोटल पेपर परसेंटाइल इज ऑल्सो अराउंड 192 इज सम, करीब करीब बोल रहे हैं लाइक फॉर 99 परसेंटाइल. So paper easy, you have to score more. So advantage, this is nothing is a paper tough. Okay, fine. Somehow you manage some problems, you get 99% for lower marks. Paper easy, your cutoff marks will increase. So I think no need to bother. No, आपको डरने का कुछ भी नहीं है कि अदर पेपर इजी या टफ हो, फिनिश हो, जितना होता है उतना प्रॉब्लम कर लो. बट हर एक सेशन में you have the more memory based question this time, the more memory based question, very very important. Okay bacho, we'll end up okay, the coming shifts will I'll upload the paper. Thank you very much, thank you for great support. All the best for remaining session students.